severe hypertension. severe hypertension severe hypertension या फिर हम उसे कह सकते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो ग्रेटर दैन 180 डिवाइडेड बाई 120 mmHg। इसमें 2 कैटेगरी है, सीवियर एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन, सीवियर एसिम्प्टोमेटिक हाइपरटेंशन मतलब HTN, या फिर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव urgency, no sign and symptom of end organ damage, no sign and symptom of end organ damage, acute हो या चाहे प्रोग्रेसिव हो। दूसरा होता है एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन HTN और हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। हाइपरटेंसिव emergencies, presence of acute or ongoing end organ damage। इस केस में presence of acute और ongoing end organ damage। End organ damage include hypertensive encephalopathy, ischemic stroke, cerebral hemorrhage, retinal hemorrhage और papilledema। retinal hemorrhage and papilledema, acute kidney injury, acute congestive cardiac failure, CCF, myocardial infarction, left ventricular hypertrophy,
hypertrophy, hypertrophy, hypertensive emergencies, hypertensive emergencies, severe hypertension or hypertensive crisis. Hypertensive emergencies can develop in patient with or without known pre-existing hypertension, can be life-threatening and require immediate treatment. BP lowered over minutes to hours, usually with parenteral medication in a monitored setting. Hypertensive emergencies, hypertensive emergencies, hypertensive emergencies, hypertensive emergencies, hypertensive emergencies. It can develop in patient. It can develop in patient with or without without known known pre-existing pre-existing hypertension, pre-existing hypertension, can be life threatening, can be life threatening, can be life threatening and require immediate treatment, and require immediate ट्रीटमेंट। बीपी आपका लोअर हो जाएगा, बीपी लोअर हो जाएगा ओवर मिनट्स टू आवर, यूजुअली with parenteral usually with parenteral medication, in a monitored setting, hypertensive urgency, hypertensive urgency, hypertensive urgency। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट, reduce BP over fast 2 hours to achieve a target of BP. Reduce BP over fast 2 to 4 hours to achieve a target of BP that is less than 160 by 100 mmHg। नोट करने वाली बात ये है
Fast and aggressive reduction in BP may induce cerebral and myocardial ischemia or infarction or acute kidney injury. If blood pressure falls below the range at which tissue perfusion can be maintained by autoregulation, mean arterial pressure, that is MAP, is average BP during one cardiac cycle should not be lowered by greater than 25 से लेकर के 30%। सो मैप का फॉर्मूला हो जाएगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3। नॉर्मल मैप रेंज, दैट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, इज 70 से लेकर के 100 mmHg। फास्ट एंड aggressive fast and aggressive fast and aggressive reduction fast and aggressive reduction in blood pressure may induce cerebral or myocardial ischemia oblique infarction or acute kidney injury if the blood pressure falls below if the blood pressure falls if the BP falls below the range at which tissue perfusion can be maintained by autoregulation. Mean arterial pressure that is MAP. Mean arterial pressure is the average BP is the average blood pressure during one cardiac cycle. Mean arterial pressure is the average BP during one cardiac cycle should not be lowered by greater than 25 से लेकर के 30%। So mean arterial pressure is equal to systolic blood pressure +2 into diastolic blood pressure divided by 3. Normal mean arterial pressure range is 70 से लेकर के 100 mmHg. For quick reduction over hour
quick reduction over hours, घंटे में अगर इसको करना है, यूज स्टार्ट डोज ऑफ ओरल क्लोनिडिन, यूज स्टार्ट डोज ऑफ ओरल क्लोनिडिन जो कि कितना होता है 0.1 से लेकर के 0.2 mg, या फिर आप दे सकते हो कैप्टोप्रिल जो कि 6.5 से लेकर के 12.5 mg। नेवर यूज सबलिंगुअल निफेडिपिन, नेवर यूज सबलिंगुअल निफेडिपिन। वॉच फॉर 2 to 4 आवर ऑफ बीपी रिडक्शन ऑफ 20 से लेकर के 30 mmHg। वॉच फॉर 2 से लेकर के 4 आवर फॉर बीपी रिडक्शन ऑफ 20 से लेकर के 30 mmHg। Thereafter, initiate a long-acting agent, preferably amlodipine, and discharge the patient. Thereafter, initiate on a long-acting agent जो कि preferably amlodipine, and discharge the patient review after 1 से लेकर के 2 days, review after 1 से लेकर के 2 days। Table 5.3 slow reduction over days in 2 group of a patient। For slow reduction over days, for slow reduction मतलब over days, इसमें लगेगा टाइम। इन 2 group of a patient, in 2 group of a patient previously treated hypertensive, previously treated hypertensive, and सेकेंड कॉलम हो जाएगा ऑन ट्रीटेड hypertensive HTN। In non-adherent patient, reinstitute prior medication, previously treated hypertensive। In non-adherent patient, reinstitute prior medication, prior medication। सेकेंड थिंग हो गया इंक्रीज डोज ऑफ अ प्रेजेंट ड्रग, इंक्रीज डोज ऑफ
present drug. Add diuretics. Add diuretics. Untreated hypertension में फर्स्ट लाइन ड्रग स्टार्ट आइदर फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें आपको देना पड़ेगा स्टार्ट आइदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डाययूरेटिक्स, इनमें से कोई एक। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सीसीबी मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हे भगवान। On follow-up, the dose and selection of medication should be adjusted to achieve a target BP of less than 160 by 100 mmHg. Adjust the dose in 1 से लेकर के 2 month. Adjust the dose in 1 से लेकर के 2 month. If BP does not respond to a particular class of drug,
If blood pressure does not respond respond to a particular class of drug, do not add another drug from the same class. Do not add another drug from same class. Choose another class from the first line drug. Choose another class from the first line drug. If there is inadequate BP response to drug, rule out the following region. If there is inadequate BP response to drug, rule out the following region. Rule out the following region. नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नॉन कॉम्प्लायंस. यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक ड्रग. यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक ड्रग जिसमें आपका स्टेरॉयड आएगा, नासाड, कैफीन, थायराइड हार्मोन. increase sodium intake and alcohol. Increased sodium intake and alcohol. Secondary hypertension. Secondary hypertension. नोट करने वाली बात ये है, सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन are more common in patient who have a hypertensive emergency. Hence evaluate patient को evaluate कीजिए with hypertensive emergencies
with hypertensive emergency for secondary for secondary hypertension. In the following group of hypertensive patient, a less aggressive goal blood pressure of less than 135 से 85 mmHg out of office reading. In the following group of hypertensive patient, in the following group of hypertensive patient, a less aggressive goal of a blood pressure of less than 135 से लेकर के 85 mmHg out of office reading, out of office reading, or less than 140/90 mmHg office reading is attained. Office reading is attained. Labile blood pressure or postural hypotension. Number 1, labile blood pressure or postural hypotension or postural hypotension. Side effect to multiple antihypertensive medication. Side effect to multiple antihypertensive medication. 75 years or older with other comorbidities or with diastolic blood pressure. 75 years or older with other comorbidities or with diastolic blood pressure less than 55 mmHg. Next, hypertensive emergency. Thanks for watching.